Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to STB Online Learning YouTube channel. Syntax Book Board English Class 9. Learn, understand, practice and improve. Welcome class 9 students. Today we will learn text reading with Sindhi translation. Get ready to strengthen your English language skills, improve your grammar, vocabulary, reading, writing and learn English in an easy and engaging way. Let's learn English together at STB Online Learning. Today we are going to start our very first lesson, the last sermon of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. So let's start. The last sermon of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Our Holy Prophet Hazrat Muhammad Rasulullah Khataman Nabiyyin Sallallahu Alaihi Wasallam, the Messenger of Allah, the last of the prophets, peace be upon him, upon his family and companions, was born in 571 AD at Mecca, Saudi Arabia, in a noble Quraysh family. The Quraysh used to worship idols and did not believe in one God. Our Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam asked the Quraysh not to worship their false gods. He told them that he was the Prophet of Allah and asked them to accept Islam and to worship the one and only true God. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam जो आखिरी खुतबो असाना पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जा रसूल सभिनी नबियन जा आखिरी नबी मथस संदन आल या साहबन ते अल्लाह जो रहमतूं सलाम हुजन। सन 571 ईस्वी में सऊदी अरब जे शहर मक्के में कुरैश जे एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान में पैदा थिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश जे माण्हुनि खे संदन कूड़नि माबूदनि जी पूॼा करण खां रोकियो। पाण सोगरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खेनि ॿुधायो त हू अल्लाह जा नबी आहिनि ऐं खेनि इस्लाम क़बूल करण ऐं हिकु ई सचे महबूद यानी अल्लाह पाक जी इबादत करण जी दावत ॾिनी। Most of them refused to accept Islam. They thought that he was against their gods and their ancestors. They opposed this new faith so much that the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam had to ask the believers to migrate to Yathrib, a city 320 kilometers, about 200 miles north of Mecca. But with time, as many people started accepting his message and converting to Islam, the Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life. Hence, when the Holy Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam got positive signals from Yathrib, accompanied by his faithful friend Hazrat Abu Bakr Siddiq Rajallahu Ta'ala Anhu, migrated there. उन्हनि मां घणनि माण्हुनि इस्लाम क़बूल करण खां इनकार कयो। उन मां कंहिं मां कुरैश जेके आहे उन्हनि मां उन्हनि जो ख़्यालु हो त हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संदन महबूदनि ऐं संदन अबनि ॾाॾनि जी अक़ीदनि जी मुखालिफ़त करे रहिया हुआ। हुननि हिन नए दीन जी एतिरी सख़्त मुखालिफ़त कई जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिननि खे यसरब ॾांहुं हिजरत करण लाइ चयो। यसरब मके खां उतर तरफ़ तक़रीबन 320 किलोमीटर यानी 200 मील जे फ़ासिले ते वाक़िअ हो। पर वक़्तु गुज़रण सां गॾु जॾहिं केतिरनि माण्हुनि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम क़बूल करणु शुरू कयो ऐं इस्लाम में दाख़िल थियणु लॻा, तॾहिं कुरैश वधीक जारे थी विया, वधीक कावड़जणु लॻा ऐं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जान वठण जूं कोशिशूं करणु लॻा। तंहिं करे जॾहिं हुज़ूर पाक हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे यसरब मां मसबत इशारा मिलिया, तॾहिं पाण पंहिंजे वफ़ादार दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सां गॾु यसरब ॾांहुं हिजरत फरमाई। After 8 days' journey, he reached the outskirts of Yathrib on 28th June 622, but he did not enter the city directly. He stopped at a place called Quba, a place some miles from the main city, and built a mosque there.
On 22nd July 622, Prophet Muhammad ﷺ entered the city. This event is known as Hijrah and marks the beginning of the Islamic calendar. Yathrib was soon renamed Madinatul Nabi, literally city of the Prophet. But Nabi was soon dropped and its name became Medina, meaning the city. 8 ॾींहनि जे सफ़र खां पोइ पाण सगुरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 जून 622 ईस्वी ते यसरब जे ॿाहिरां पहुता, पर पाण सगुरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिधो शहर में दाख़िल न थिया। पाण सगुरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा नाले हिकु हंधि ते तरसिया, जेको मुखी शहर खां कुझु मीलनि जे फ़ासिले ते हो, ऐं उते हिकु मस्जिद तामीर कई। 2 जुलाई 622 ईस्वी ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में दाख़िल थिया। हिन वाक़े खे हिजरत चयो वञे थो ऐं इहो इस्लामी कैलेंडर जी शुरूआत जी निशानदेही करे थो। यसरब जो नालो जल्दी मदीनतुन नबी रखियो वियो, जंहिंजी लफ़्ज़ी माना नबी जो शहर आहे, पर कुझु वक़्त खां पोइ अल नबी लफ़्ज़ ख़तमु कयो वियो ऐं शहर जो नालो मदीनो रखियो वियो, जंहिंजी माना शहर आहे। मदीना यानी मदीनो जेको अरबी ॿोलियो लफ़्ज़ आहे ऐं जंहिंजी माना ई शहर आहे, मीन्स द सिटी। At the time of arrival of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina, the city had 4 broad groups of people. There were the Muslims, including those who were from Medina and those who had immigrated from Mecca. Then there were the hypocrites, that is those who embraced Islam in name only, but actually were against it. Additionally, there were the people from Aus and Khazraj, who were still pagans, but were likely to accept Islam. Aus and Khazraj are the names of 2 different tribes living in Medina at that time. And finally, there were the Jews, who were huge in number and formed an important community there. जॾहिं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पहुता, तॾहिं शहर में माण्हुनि जा 4 वॾा गिरोह आबाद हुआ। उन्हनि मां हिकु गिरोह मुसलमान जो हो, जंहिंमें मदीने जा रहवासी ऐं उहे माण्हू शामिल हुआ जेके मके मां हिजरत करे मदीना आया हुआ, यानी अंसार ऐं मुहाजिर। अंसार ऐं मुहाजिरीन। अंसार हुआ जेके मदीने जा रहण वारा, जिन खे अल्लाह ताला क़ुरान मजीद में अंसार सॾियो आहे, ऐं मुहाजिर उहे आहिनि जेके हिजरत करे आया हुआ। उनखां पोइ मुनाफ़िक़नि जो गिरोह हो, यानी उहे माण्हू जिन सिर्फ़ु नाले मात्र इस्लाम क़बूल कयो पर हक़ीक़त में इस्लाम जी मुखालिफ़त कंदा हुआ। इहे हुआ जेके पाण सगुरनि वटि या साहबनि वटि जॾहिं वेंदा हुआ त चवंदा हुआ असीं मोमिन आहियूं, असां अव्हां ते ईमान आंदा आहियूं, असीं अव्हां सां गॾु आहियूं। ऐं वरी जॾहिं वापसि पंहिंजे सरदारनि वटि वेंदा हुआ, कुरैशनि वटि वेंदा हुआ, उते चवंदा हुआ असीं अव्हां सां गॾु आहियूं, ॿितरफ़ो हलंदा हुआ। इहा हुनजी मुनाफ़िक़त जी निशानी हुई, जंहिं करे हिनखे मुनाफ़िक़ सॾियो वियो। उनखां अलावा औस ऐं खज़रज जा माण्हू बि हुआ। औस ऐं खज़रज इहे 2 क़बीला आहिनि। इहे क़बीला हुआ उन वक़्तु जेके बुतनि जी पूॼा कंदा हुआ, जेके अञा ताईं बुत परस्त हुआ पर इस्लाम क़बूल करण जा इम्कान रखंदा हुआ। ऐं आख़िर में यहूदी हुआ जेके वॾी तइदाद में हुआ ऐं मदीने में हिकु अहम या हिकु वॾी बिरादरी ठाहींदा हुआ। In order to ensure that all these people lived peacefully with each other, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter. He wanted the different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities and for the security of the city of Medina. He succeeded in drawing up the Constitution of Medina, also known as the Charter of Medina, through which a kind of understanding was developed among all the communities living in Medina. उन सभिनी माण्हुनि खे हिक ॿिए सां अमन ऐं सकून सां रहण खे यकीनी बणाइण लाइ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभिनी बिरादरियुनि या सभिनी क़ौमनि जे अॻुवाणनि खे हिन मुआमिले ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ घुरायो। पाण सगुरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहियो थे त मुख़्तलिफ़ गिरोह बिरादरियुनि जे विच में हम आहंगी ऐं मदीने जी शहर जी सलामती लाइ हिकु बाज़ाब्ता मुआहिदे ते पहुचनि, ऐं पाण सगोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने जे दस्तूर तयारु करण में कामयाबु थिया, जंहिंखे मदीने जो मंशूर या मीसाक मदीना पिणु चयो वञे थो। इन ज़रिए मदीने में रहंदड़ सभिनी बिरादरियुनि या क़ौमनि जे विच में हिकु क़िस्म जो इत्तफ़ाक़ ऐं सम्झ पैदा थी, जंहिं अॻिते तबलीग इस्लाम जे लाइ आसानियूं पैदा कयूं। It mentioned the rights and duties of the Muslims and Jews of Medina, gave freedom of religion, and prohibited any alliance with the outside enemies,
It also declared that any dispute would be referred to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for settlement. In later years, he unified the different Arab tribes under Islam, carried out social and religious reforms, and administrative developments that further consolidated the Islamic community in Medina. इनमें मदीने जे मुसलमाननि ऐं यहूदियुनि जा हक़ ऐं फ़र्ज़ बयानु कया विया हुआ। जो ठाह थियो, जेको मिसाक थियो, जेको मुआहिदो थियो, इनमें मज़हब जी आज़ादी ॾिनी वई हुई ऐं ॿाहिरियुनि दुश्मन सां कंहिं बि क़िस्म जी इतिहाद करण खां मना कई वई हुई। को बि मामिलो थींदो कंहिं ॿाहिरी माण्हू सां, ॿाहिरि दुश्मन सां को बि इतिहाद न कयो वेंदो। पर छा कबो, इनमें इहो बि करार ॾिनो वियो त कंहिं बि तकरार जी सूरत में फ़ैसिलो कराइण लाइ मामिलो हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾांहुं पेश कयो वेंदो। Means the matter would be referred to the Holy Prophet and would not be communicated with the outside enemies. ईंदड़ सालनि में पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख़्तलिफ़ अरब क़बीलनि खे इस्लाम जे झंडे हेठि मुतहद कयो, समाजी ऐं मज़हबी सुधारांदा ऐं इंतिज़ामी तरक़ियूं कयूं, जिन मदीने में इस्लामी बिरादरी खे हिकु वधीक मज़बूत ऐं मुस्तहकम कयो। It was a great success for the Muslims at that time. In the year 10th after Hijri or after Hijrah, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam undertook his farewell pilgrimage to Mecca. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslims, for it was the first and last pilgrimage made by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well as an occasion when he taught Muslims how to perform the Hajj. Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon in the Urana valley of Mount Arafat on the 9th of Dhul Hajj, 10th after Hijrah, 6 March 632. There were countless Muslims present with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during his last pilgrimage when he delivered his last sermon. 10 हिजरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के ॾांहुं हजतुल विदा अदा करण लाइ रवाना थिया। ही हज मुसलमाननि लाइ तारीख़ जे सभ खां अहम वाक़िअनि मां हिकु आहे, छाकाणि इहो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहिरियों ऐं आख़िरी हज हो ऐं इन मौक़े ते पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान खे हज अदा करण जो तरीक़ो पिणु सेखारियो। इन खां अलावा हिन हज जे दौरान पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात जे जबल जी वादी उराना में 9 ज़ुल्हज 10 हिजरी 6 मार्च 632 ईस्वी ते पंहिंजो आख़िरी ख़ुतबो ॾिनो। जॾहिं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजो आख़िरी हज अदा कयो ऐं आख़िरी ख़ुतबो ॾिनो, तॾहिं बेशुमार मुसलमान पाण सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां गॾु मौजूद हुआ। Delivering his last sermon, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam first of all praised and thanked Allah and then said, "O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again. Therefore, listen to what I am saying to you very carefully, and take these words to those who could not be present here today." Then, amongst other things, he gave the following messages. पंहिंजो आख़िरी ख़ुतबो ॾींदे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभ खां पहिरियां अल्लाह पाक जी हमदो सना ऐं शुक्र अदा कयो ऐं पोइ फरमायूं, ऐं इंसानो मुंहिंजी ॻाल्हि ध्यान सां ॿुधो, छो त मूंखे ख़बर नाहे त हिन साल खां पोइ मां ॿीहर अव्हां जे विच में हूंदुसि या न। तंहिं करे जेकी ॻाल्हियूं मां अव्हांखे ॿुधाए रहियो आहियां उनखे तमामु घणे ध्यान सां ॿुधो ऐं इहे ॻाल्हियूं उन्हनि माण्हुनि ताईं बि पहुचायो जेके अॼु हिते मौजूदु न आहिनि। ऐं पोइ ॿियनि ॻाल्हियुनि सां गॾु पाण सगोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेठियां पैगाम ॾिना। O people, regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. Hurt no one, so that no one may hurt you. Beware of Satan, for the safety of your religion. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. So beware of following him in small things. So people, it is true that you have certain rights with regard to your women, but they also have rights over you. ऐं इंसानो, हर मुसलमान जी जान ऐं माल खे हिकु मुक़दस अमानत सम्झो। जेके शयूं अव्हां वटि अमानत तौरु रखियल आहिनि उहे उन्हनि जे हक़दार मालिकनि खे वापसि करियो। कंहिंखे ईज़ाउ न ॾियो त जीअं को बि अव्हांखे ईज़ाउ न ॾिए। शैतान खां ख़बरदार रहो। पंहिंजे दीन जी हिफ़ाज़त लाइ
हुन वॾी ॻाल्हियुनि में अव्हांखे गुमराह करण जी उमेद विञाए छॾी आहे। तंहिं करे नंढियुनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि में हुनजी पैरवी करण खां ख़बरदार रहो, पासो करियो, बचो। ऐं इंसानो, इहो सच आहे त अव्हांजा पंहिंजनि औरतुनि जे हवाले सां कुझु हक़ आहिनि, तव्हांजा औरतुनि ते हक़ आहिनि, पर उन्हनि जा बि अव्हां ते हक़ आहिनि। दे हैव also rights over you. All mankind is from Adam, and Adam was created from dust. The noblest of you in Allah's sight is the most God-fearing. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. A white has no superiority over a black, nor does a black have any superiority over white, except by pity and good action. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. सॼी इंसान ज़ात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आहे ऐं हज़रत आदम खे मिटी मां पैदा कयो वियो। अल्लाह जी नज़र में अव्हां मां सभ खां वधीक इज़त वारो उहो आहे जेको सभ खां वधीक परहेज़गार आहे। कंहिं अरब खे गैर अरब ते का बरतरी का फ़ोक़ियत हासिल न आहे, ऐं न ई कंहिं गैर अरब खे अरब ते का बरतरी या फ़ोक़ियत हासिल आहे। न कंहिं अछे खे कारे ते का बरतरी हासिल आहे, ऐं न ई कंहिं कारे खे अछे ते का बरतरी हासिल आहे, सवाइ परहेज़गारी ऐं नेक अमल जे। तंहिं करे मां अरब ऐं दौलत जी बुनियाद ते अज़मत ऐं बरतरी जा सभु कूड़ा दावा पंहिंजे पेरनि हेठां लताड़ियां थो। पाण छोकिरनि इहे सभु कूड़ियूं दवाऊं ख़तमु करे छॾियूं, सभिनी खे पंहिंजे पेर ॾेई छॾियो ऐं ख़तमु करे छॾियो। Every Muslim is a brother to another Muslim, and that the Muslims constitute one brotherhood. Nothing shall be legitimate to a Muslim which belongs to a fellow Muslim unless it was given freely and willingly. The Holy Prophet completed his last sermon by saying, "Be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people." The messages conveyed in this sermon are for all times. If the Muslims follow these messages, the result will be a fair and equitable society in which there will be honesty and justice, and meritocracy will be the guiding principle. हर मुसलमान जो ॿिए मुसलमान जो भाउ आहे, ऐं मुसलमान हिक ॿिए सां भाई पीउ जे रिश्ते में आहिनि, हिक ॿिए जा भाउर आहिनि। कंहिं मुसलमान लाइ इहो जाइज़ न आहे त हू पंहिंजे कंहिं मुसलमान भाउ जी अहिड़ी शइ ते कब्ज़ो करे जेका खेसि आज़ादी ऐं ख़ुशी सां न ॾिनी वई हुजे, या उन मालिक जी मर्ज़ी खां बग़ैर हुजे हा। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजो आख़िरी ख़ुतबो इन्हनि लफ़्ज़नि सां मुकमिल कयो, ए अल्लाह, तूं गवाह रहिजां त मूं तुंहिंजो पैगाम तुंहिंजे माण्हुनि ताईं पहुचाए छॾियो आहे। इन ख़ुतबे में इन्हनि पैगाम हर दौर रहिया आहिनि। जेकॾहिं मुसलमान इन्हनि पैगामनि ते अमल कनि त नतीजे में हिकु अहिड़ो मुनसिफ़ाणु, इंसाफ़ वारो, बराबरी वारो मुआशिरो क़ाइमु थींदो जंहिंमें ईमानदारी ऐं इंसाफ़ हूंदो, ऐं जंहिंमें मेरिट रहनुमाई कंदड़ उसूल हूंदो। Well done, students. A reading of the lesson is now complete. You have successfully explored the last sermon of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and learned about its important messages. So keep learning, keep practicing, and keep growing. Every lesson you learn today is a step towards a brighter tomorrow. So now in next lesson, inshallah, we will learn the new vocabulary words along with their meanings. Stay tuned with STB Online Learning. Don't forget to like this video and subscribe to STB Online Learning YouTube channel. Turn on the notification bell so you never miss a new lesson. Till then, goodbye. Allah Hafiz.